Assalamu alaikum and welcome to the first episode of फुटबॉलिस्तान। फुटबॉलिस्तान जब हमने शुरू किया तो एक आइडिया ज़रूर था कि जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू करें तो एक ऐसे प्लेयर से बात करनी चाहिए जो पिछले कुछ सालों का जो दर्द पाकिस्तानी फुटबॉल में गुजरा है उसको महसूस भी कर सके और उसके साथ साथ वो अपनी इनसाइट भी ऐड कर सके और वो जो उसके अंदर पिछले कुछ सालों में मैचेस खेले गए उसमें भी हिस्सा लिया तो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हो सके और ये हमारा एम था। और आज इसीलिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के गोलकीपर यूसुफ बट को जो हमारे पहले गेस्ट बन रहे हैं फुटबॉलिस्तान के लिए। तो हमारे लिए भी एक छोटा सा हिस्टोरिक मोमेंट है और यूसुफ ने काइंडली टाइम निकाला और हमें आज ज्वाइन किया है डेनमार्क से। और हम आज एक पूरी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं यूसुफ से। जो पॉडकास्ट का हमारा फॉर्मेट है कि उनकी जर्नी क्या रही, वो पाकिस्तान की टीम में कैसे पहुंचे और उनकी पाकिस्तान टीम के साथ जर्नी कैसी रही जो पिछले 12-13 साल में बहुत ही ऊपर नीचे होती रही है। पर हम यूसुफ से कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे और थोड़ा सा उनका तारुफ भी मजीद कराते जाएं। यूसुफ एट द मोमेंट इज पाकिस्तान नंबर वन चॉइस गोलकीपर। 17 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस हैं उनके पास, जिसमें से वो 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी जीत चुके हैं। और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो वो 2 मैचेस के साथ साथ 2 क्लीन शीट्स भी रख चुके हैं। तो यूसुफ, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज ज्वाइन किया और टाइम निकाला एंड आपने अग्री किया कि आप पहले गेस्ट बनेंगे फुटबॉलिस्तान में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सबको और आपको भी शाहरुख। It's a big honor for me to be in the show for your show as well. हमें सब पता है कि आपने क्या कहते हैं पाकिस्तान फुटबॉल को बहुत सालों फॉलो किया है। मुझे खुद ही याद था जब आप ये क्या था, साफ में था बांग्लादेश में, आप यंगस्टर थे और टीम को आप शैडो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और आपको भी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी फुटबॉल में। फिर ख्याल है हमारे आज जो गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह बहुत वैल्यू होएगा इसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बड़े आपने क्या याद करा दिया जवानी के दिन को नेपाल में, लेकिन आपकी जवानी के दिनों पे आते हैं। तो यूसुफ, पहले बताइएगा, क्योंकि हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो ये है कि आपकी स्टोरी पहले हम समझना हम्म, चाहते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन कोई भी अगर फुटबॉल टीम को फॉलो करता है आपका नाम तो ज़रूर जानता है। और इस वक़्त आपके पास 17 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस हैं। हसन बशीर के पास जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, यू आर द सेकंड हाईएस्ट अपीयरेंस मेकर और आप एक बहुत सीनियर प्लेयर भी हैं पाकिस्तान की, क्योंकि एज पर द अवेलेबल डेटा, और आप मुझे इस पे करेक्ट कर सकते हैं, आपने 415 लीग अपीयरेंसेस किए हैं वेरियस लेवल्स ऑफ डेनिश फुटबॉल में और डिफरेंट क्लब्स के लिए। हम्म, तो ये जो एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स आपको एक सेट अपार्ट जरूर करता है, बट किस तरह हुआ आपका करियर? और अगर कोई भी किसी से जाके पाकिस्तान में हम्म, पूछे कि यार आपने फुटबॉल खेलना है, तो मुझे नहीं लगता गोलकीपर की पोजीशन पहली दफा किसी के ज़हन में आती है कि गोलकीपर बनेंगे नहीं यार। नहीं नहीं, मेरे में भी नहीं आया था ये। इसलिए मेरा नाम तो बट है ना। और जो जब जवानी में थे मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करता था। उधर वो एक खिलाड़ी का नाम था निकी बट, नंबर 8 पोजीशन पे खेलता था। और उसको मैं बहुत फॉलो करता था और इसीलिए मैं भी नंबर 8 पोजीशन पे ही खेलता था। जब कितने साल का था, 6 7 साल का था। और उधर पे तो बस हम शौक से खेलते थे, पर क्लब में यहाँ पे तो एकेडमी लेवल होती है ना। बिल्कुल जवानी से जब भी फुटबॉल खेलो, ये नहीं होता कि तुम जाके पार्क में खेलो, तुम एकेडमी में खेलते हैं। यूथ सिस्टम होता है यहाँ पे डेनमार्क में, बहुत अच्छा यूथ सिस्टम। मुझे याद था कि जब मैं खेल रहा था, पर जो सब मेरे जो क्लासमेट्स थे वो फर्स्ट टीम के अंदर था, फर्स्ट टीम के अंदर थे और मैं तकरीबन मेरा चौथे टीम पे था। जो हमारा ये जो एज ग्रुप्स थे और क्या कहते हैं। और मेरा भी दिल था कि मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलूं। मैं हमेशा ही दूसरों लोगों के साथ खेलता जिनको मैं इतना जानता नहीं था। और एक दिन उनके पास कोई गोलकीपर नहीं था और मैं ये हम तो भट्ट है ना, हम खाना बहुत खाते थे। अभी तक तो खाते हैं, पर ट्रेनिंग भी करते हैं ना। क्या कहते हैं, उस जमाने में मेरा ये मांस भी काफी था। और माँ का खाना भी बहुत शौक था। ये कहते हैं फिर काफी मोटा था, काफी मोटा था। और फिर पोजीशन फर्स्ट टीम पे आया था गोलकीपिंग पे। फिर मैं 6 दूसरे लड़के आए थे गोल में। मेरा भी दिल था कि अपने दोस्तों के साथ खेलूं। फिर उनमें से मेरा ख्याल है जो अपने जिस्म के साथ गोल को मोस्टली कवर कर सकता था वो मैं था।
और इसलिए कि कहते हैं मैं गोलकीपर बन गया था। मैं ख्याल था मैं कितने साल का था, 8 के 9 साल का था मेरा ख्याल है, जब मैं गोलकीपर बन गया था। और उधर से क्या कहते हैं ये मैंने गोलकीपिंग बहुत उधर से की थी ना। हाँ अच्छा, तो इससे अगर थोड़ा-सा पीछे जाएँ, आपने अभी बड़े मज़े से कहा कि आपको खाने का भी शौक था और आप भट्ट भी हैं, तो बंदा नेचुरली ये तो सोच सकता है कि आप, इसका मतलब है, लाहौर से होंगे, अगर हाँ। मैं गलत नहीं बोल रहा नहीं तो? बिल्कुल, लाहौर लाहौर की हम क्या कहते हैं, जब मैं कितने साल के थे हम, तकरीबन मैं हम 6 साल के थे, हम पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे। इसलिए हमें उर्दू नहीं आती थी। जब हम छोटे थे, हमारी अम्मी जी को उर्दू नहीं आती, डेनिश नहीं आती थी, सॉरी। इसलिए हम यहाँ पे कि बताया यहाँ पे तो इन डेनिश ही बोलते हैं स्कूल में और ये सब कुछ में। फिर हम शिफ्ट हो गए थे लाहौर डिफेंस में 1 साल के लिए। अच्छा। उधर हमने उर्दू सीखा था और स्कूल गए थे और फिर वापस आ गए थे डेनमार्क। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा ऐड करते जाएँ, क्योंकि जब आपकी थोड़ी-सी डिस्कशन हम ज़्यादा करते हैं, तो आप रहते डेनमार्क में हैं, जी खेलते हैं पाकिस्तान के लिए जी। हैं, और ऊपर से आपके पास सिटीज़नशिप जो है वो कनेडियन है। कैनेडियन है तो बिल्कुल। ये फैमिली हिस्ट्री कैसे वर्कआउट होती है? मतलब लाहौर से कनाडा, कनाडा से डेनमार्क, फिर वापस पाकिस्तान? हाँ जी, हाँ जी। और जो ओरिजिनल से तो कश्मीरी, बिल्कुल पीछे से। और क्या कहते हैं, मेरे अब्बू जी गए थे जब वो यंग थे, वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। उधर से मेरी अम्मी जी के साथ शादी हुई थी पाकिस्तान में, लाहौर में। और मेरी अम्मी लाहौर डिफेंस की। और क्या कहते हैं, उधर से उनकी शादी हो गई थी, फिर उन्होंने पता नहीं किस तरह आ गए थे। वो सोचा था जी चलो यहाँ पर डेनमार्क में कोई अच्छा मौका है, उधर जाके काम करते हैं। फिर मेरे अबू जी यहाँ पे आ गए थे और फिर उनको इतना पसंद नहीं था, उनको कनाडा और पसंद था। और फिर जब अच्छा। मैं और मेरे मेरे भाई यकूब, जो भी नेशनल टीम के बड़े हिस्से थे काफी सालों में, वो क्या कहते हैं ये उन्होंने हमारे पेरेंट्स को पूछा कि जी इनको डेनिश चाहिए कि कैनेडियन। और मेरे अबू जी का ख्याल था कि नहीं, ये हम सब जाके वापस शिफ्ट करेंगे कनाडा। फिर उन्होंने कैनेडियन ही रखा था। उस जमाने में डबल सिटीजनशिप अलाउड नहीं था। अब तो अलाउड होगी हुई है, पर उस जमाने में नहीं था। ओके, ओके, चलो वो तो सेंस बनता है। फिर आप लोग चले गए डेनमार्क, और जहाँ आप लोग की रिहाइश भी कोपेनहेगन में थी, जी जिस तरह बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो आप स्कूल में फुटबॉल खेलते रहे, और अभी तो आप माशाल्लाह बहुत लीन और फिट हो चुके हैं, लेकिन वो जर्नी उसके बाद किस तरह आगे बढ़ी, जब आप स्कूल टीम से फिर आगे बढ़ते गए? वो था क्लब लेवल था, स्कूल टीम में था, वो क्लब लेवल। पर उधर हम खेलते थे। और फिर जब तुम क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं 15 साल के हो जाते हैं ना, फिर वो प्रो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाते हैं। और सब मेरे जो दोस्त थे वो इधर उधर वो सब साइंड हो गए थे, और मैं तो अभी तक थोड़ा मोटा कटा ही था। पर वैसे मैं काफी तेज था कहते हैं लाइन पे। और मैं ट्रेनिंग बहुत करता था। अब अभी भी ट्रेनिंग मैं बहुत करता हूँ। जो भी मेरा जो बिगेस्ट एफर्ट है, मेरा टैलेंट का नहीं है, पर जो मेरा वर्क एथिक्स, उसका बहुत मेरा ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। वर्क एथिक्स का ये कि मैंने बहुत की है, ट्रेनिंग बहुत की है, अभी तक की बहुत करता हूँ। और एवरेज से मोर। और क्या कहते हैं ये जब मैं ये 15 साल का था, फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्रायल इधर उधर लेता हूँ। फिर मैं HIK में आया था। उधर मैंने ट्रायल लिया उनके पास, वैसे फारग गोलकीपर था, मैं उधर बन गया। पर उधर लक भी होता है ना, या फुटबॉल में यू हैव टू बी गुड, पर लक भी बहुत, टाइमिंग लक हैव टू बी इन लाइन। इसलिए क्या हुआ था फिर मैं अंडर 15 खेला था। अंडर 17, अंडर 19 के सब गोलकीपर्स, फर्स्ट टीम के स्पॉट के गोलकीपर्स, दो को इंजरी होगी। मैं तकरीबन 4 बंदे 5 बंदे को, पर मैं 16 साल का था, मैं फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हमारी जो फर्स्ट डिवीजन, क्या कहते हैं, सीनियर फर्स्ट डिवीजन में मैं छोटा छोटा बच्चा था, और काफी मोटा भी था। और वो हमारे जो गोलकीपर, सॉरी जो कोच थे, वो फॉर्मर गोलकीपर थे। उसने मुझे कहा देख यूसुफ, मैं उधर था 15 के 16 का था, 16 आई थिंक, 15 16 का था, 16 आई थिंक। वो मुझे बता रहा था कि देख यूसुफ, lose 20 kilos and shirt number 26 is yours.
because you have all the हम्म। abilities. I can see you have the good instincts and you have the really good reflexes. You know all the hard stuff, but you need to learn the easy stuff. But you need to lose weight. और जब उन्होंने मुझे ये कहा था उन्होंने मुझे ये कहा था, फिर मैंने कहा था चलो, ये मोटिवेशन आपने मुझे दिया। और फिर मैंने पूरा मेरे अम्मी की खाना छोड़ दिया था। और 6 महीने में मैंने तकरीबन 25 किलो ड्रॉप की थे। 25 किलो ओ खैर, तो मतलब लगता है आपने पराठे शराठे सब खाना छोड़ दिया था, सब आपने कहा भाई अब फोकस करेंगे दिन। ट्रेनिंग पे और वेट लॉस पे। हाँ जी, वेट लॉस पे मैंने खाली किया था। उस जमाने में ट्रेनिंग का नहीं इतना पता था। फिर मैंने तकरीबन मैं गया था 85 किलोज टू तकरीबन 65 के तरह के 70 किलोज, 20 नहीं 65 किलोज, तकरीबन 20 किलो लूज की थी। और फिर मुझे हर एक दिन तकरीबन 10 किलोमीटर्स रनिंग प्लस ट्रेनिंग 6 टाइम्स अ वीक। और उसके बाद जर्सी नंबर 26 मिल गया था और मैं फर्स्ट टीम के अंदर आ गया था। अच्छा। और फिर उधर क्या है कि मुझे कह रहे थे जी अब तूने ये कर लिया, अब कहते हैं चलो जी बेटा 10 किलो गेन करो, मसल मैस। भजन आप मुझे ये पहले क्यों नहीं बताते थे? मैं एकदम करता था। और उस जमाने में ट्रेनिंग का भी नहीं इतना मालूम था कि किस तरह ट्रेनिंग करते हैं किस तरह नहीं करते। फिर वो पूरा काम उधर से शुरू किया कि जी अब जिम। फिर मैंने जिम शुरू किया। ट्रेनिंग होती है 5-6 टाइम्स अ वीक, फिर मैंने जिम सेशन शुरू किया 3-4 टाइम्स अ वीक। और फिर तो काफी ट्रेनिंग होती है ना। और क्या कहते हैं, और उस जमाने में क्या कहते हैं, इतना इतना गाइडेंस नहीं होता था उस जमाने में। फिर मैंने काफी चीज खुद भी की है, लर्न भी किया, रीड भी किया काफी चीजें, और उधर से भी गेन किया। और जब मैं 16 साल का था, लक भी होता है, जैसे मैं बता रहा था लक होता है। स्क्वाड में अंदर आ गया था, हम 4 गोलकीपर्स थे, स्क्वाड में आ गया था। और 3 को इंजरी होगी और एकदम हियर यू गो, अंदर आ जा तू। और मैं 17 साल का था, मुझे डेब्यू मिला था हमारे डेनिश फर्स्ट डिवीजन में। अच्छा, तो ये आप 17 साल के हो गए हैं, आपने एक समझ लिया कि आप एक गोलकीपर बन सकते हैं, आप एक क्लब में भी आ गए हैं, जैसा ऐसा कि आप बता रहे हैं। ये कौन सा साल था? उफ, अल्लाह, बहुत साल पहले। एज हो रही है, उम्र हो रही है आपकी। 2006 के 7 7 6, 2006-7। या ठीक है। तकरीबन उधर। तो एक एक और भी एस्पेक्ट होता है जो बहुत सारे लोग, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी या साउथ एशियन फुटबॉलर्स या जनरली एशियन फुटबॉलर्स भी अगर यूरोप में खेल रहे हो, तो उनको, और ये मैंने बहुत सारे हमारे कौमी टीम के प्लेयर्स जो हैं उनसे भी सुना है कि रेसिज्म का सामना करना पड़ता है यूरोपियन बहुत फुटबॉल सिस्टम में, बहुत। इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं। और खास तौर पे क्योंकि आपको पता है कि हम दूर से स्टैंड आउट करते हैं, हमारे जरा फीचर भी थोड़े डिस्टिंक्टिव हैं, तो किसी को पता लग जाता है यार ये, कम से कम आपको कोई देख के यही कहेगा कि यार ये लाहौर का बट है, अपने आप को शेप में रखा है, वो हम्म, ये नहीं कहेगा कि कोपनहेगन का कोई यंग डेनिश लड़का है। देखो तो रेसिज्म का कैसे आपने सामना किया, और मतलब देखो क्योंकि रेसिज्म के लिए आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग बहुत होना पड़ता है। बहुत बहुत बहुत। देखो ये होता है ना कि आपको 1 लेवल बेटर नहीं होना, 2 लेवल्स बेटर नहीं होना, 3 लेवल्स बेटर होना है। और यू हैव टू, इसलिए जितना ट्रेनिंग मैंने पुट इन किया, आई हैव ट्रेन डबल एज हार्ड एज एनीवन। I have gone to football 5 times a week. I've played football on the side 3-4 times a week. Gym जाता था 4 times a week. आप यकीन करो, फुटबॉल ट्रेनिंग ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, मैंने जिस्म बनाया था। क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां से भी, अपने पेरेंट्स से भी, मेरा हाइट भी काफ़ी कंपेयर टू बहुत हाई है, कंपेयर टू हमारे एशियंस, हमारे पाकिस्तानी लोगों के। और मैंने बहुत सारा बिल्डअप किया। और ये भी होता है कि ट्रेनिंग में मैंने इतना ट्रेनिंग किया, हमेशा पहले आता था, हमेशा आखिर में जाता था। ट्रेनिंग मेरा इतना, जिसमें आपको पहले बता रहा था, टैलेंट was not the big thing for me. Hard work and ethics was the biggest thing for me. Determination to become the best version, to become a professional, to one day be able to represent Pakistan. That is by far, people would put in the work, I would put in the double work every single time. People would make one save, 2 saves. I would grind to make the 3, 4, 5, 6, 7 saves. People were starting coming up. मेरा जो यही सबसे biggest attribute था, जो इसलिए मुझे बहुत शौक था स्ट्रीट फुटबॉल खेलने, स्ट्रीट टूर्नामेंट्स, इस तरह के मनी प्राइज होते थे।
मैं पूरा पूरा डेनमार्क जाता था, खेलता था अपने दोस्तों के साथ। ये भी मैंने बहुत किया था। और मेरा सबसे बिगेस्ट स्टैंड आउट था जब मैं यंग था, गोलकीपिंग। इसलिए आई वाज द यंगेस्ट डिवीजन गोलकीपर, द यंगेस्ट डिवीजन गोलकीपर इन डेनमार्क उस जमाने में। और क्या कहते हैं ये, और मेरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट जो पहले मेरे ख्याल है 5, 6, 7, 8 साल के बाद आया था, कि प्लेइंग विद द फीट, being able to play from the back, getting the ball, controlling it, being able to see, okay, being able to do जो आप हमेशा जब हम पाकिस्तान आता है वो उसको कहते हैं ब्राजीलियन किक, पर ये नहीं हम यहाँ पे कहते हैं। पर इस जो हमारी मॉडर्न मॉडर्न फुटबॉल का स्टाइल, ये मैंने अडेप्ट नहीं किया था, बस मेरे लिए नेचुरल था। मैंने ट्रेनिंग नहीं की इसलिए जिससे आज करते हैं मॉडर्न मॉडर्न टाइप, तो कि डाइव किस तरह करो, किकिंग का, प्लेइंग का स्टाइल, मैंने एक्चुअली खुद बाय खुद ये किया था। और बस मेरे 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 आप सोचो, it was in my DNA, it was in the way that I saw football, not that how it would work. It was just by luck. Like I told you, football is a lot about luck. It's a lot about where you fit in, and there I had to be better, one two step. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, इस पे अगर हम थोड़ा-सा एक स्टेप बैक लें, आप 17 साल के हैं, 2006-7 चल रहा है, आपने फर्स्ट टीम फुटबॉल में पहली दफ़ा गोलकीपर बन रहे हैं और ये डेनिश सेकंड डिवीज़न होगा प्रोबेबली उस टाइम पे, या थर्ड डिवीज़न था? First division. फर्स्ट डिवीज़न था। तो कैसा वैसे फ़ील हुआ एज़ अ 17 ईयर ओल्ड, आप गोलकीपर हैं, डेनिश फर्स्ट डिवीज़न में खेल रहे हैं? हाउ वाज़ दैट फीलिंग इन योर फर्स्ट गेम? Oh, डू यू रिमेंबर? yes, 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 yes. I was so nervous. I was so nervous. I was so nervous. मेरे debut में मैं अंदर आया था। मुझे भी तक याद है, 60 मिनट में अंदर आया था। We were 1-0 down. और हम निस्टल के खिलाफ खेल रहे थे। I remember this. और फिर उन्होंने ख्याल है हम we were going for the draw, and we went every man up, and काउंटर पे उन्होंने गोल किया। और मुझे याद है उन्होंने गोल किया था, और this was 4, 5, 6 hours away in bus. I was just sitting for myself, and I remember I was crying on the way home because I conceded a goal and we lost. And I think, oh, this was my big chance. This was my big chance. This was my big chance. So yeah, I remember that. तो उसके बाद फिर आगे अभी आपने मेंशन भी ये किया कि यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान, ये ख्याल आपके ज़हन में था। Mm. पर ये ख्याल आगे बढ़ता किस तरह गया और इसमें आपके क्लब करियर का क्या रोल रहा? और एक और चीज़ भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पाकिस्तानी फुटबॉल सर्कल्स में एक आई डोंट नो एक अर्बन लेजेंड है या मिथ है कि आपको एक कॉल अप मिली थी कनाडा अंडर 19 टीम से जी और आपने उनको मना कर दिया था कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो क्या ये वाक़ई हुआ था? जी, ये हुआ था कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। अंडर 20, उनके लिए अंडर 20s के लिए था। यहाँ पे एक एक प्लेयर था, हमारी फरहान, पता नहीं क्या नाम था उसका। अ, वो भी खेलता था, और वो भी होस्टस में खेलता था, फर्स्ट डिवीजन में। और वो उनका स्टार प्लेयर था उस जमाने में। और मैं तो यंगस्टर था, मैं तो रिजर्व गोलकीपर था, और फिर भी उसी लीग में। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मेरे अम्मी बहुत सख्त थे। पाकिस्तान में भी मुझे अप्रोच किया था। और मैंने सोचा था यार, ये अंडर 20 के लिए था, और पाकिस्तान नेशनल टीम। और मैंने सोचा यार, पाकिस्तान मैं जिंदगी में मैं कनाडा नहीं गया। सो आई हैव नो रियल रिलेशनशिप विद कनाडा, बस बाय नेम। जिंदगी में मैंने अपने दो पैरों कनाडा में नहीं रखा, बट आई हैव द पासपोर्ट। क्या बात है भाई पर आप। समर्स में तो हमेशा हम पाकिस्तान ही होते थे। मुझे पूरा लाहौर का पता है, किधर जाना है किधर नहीं जाना, किस तरह करते थे, माहौल हाँ, किस तरह। बट कढ़ाई कहाँ से मिलती है, बिल्कुल, अच्छे खाने कहाँ से मिलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। फीकी की लस्सी, और जो पाए, सब पता होगा आई एम श्योर आपको। हाँ जी, हाँ जी। और जो इवन जो है मॉडल टाउन का जो ग्राउंड था, मैं उधर भी मैंने खेला हुआ था पहले मेरे कजन्स के साथ। और उधर सब कुछ अंदर हमने उधर एक फेंस होती थी, हमने उसको नीचे जाके अंदर जाके खेल लेते थे। कोई आके हमें हमें गाली देते थे कि जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। इस तरह की चीजें। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने 100% क्या कहते हैं परस्यू किया था, क्या कहते हैं नेशनल टीम का। जब वो आया था, पहले दफा नहीं कहा था, इसलिए मेरे इस तरह मेरे अम्मी सख्त थे। उन्होंने कहा था नहीं, तुम अभी बहुत यंग हो। और उस जमाने में
ये भी था कि डेनमार्क में इस तरह के ड्राइंग्स थे, और डेनमार्क के जिस तरह जो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किया था। और पाकिस्तान में बहुत और सब मुस्लिम कंट्रीज में बहुत बड़ा ये चल रहा था। और मेरे पेरेंट्स बहुत डरते थे कि ये ना लोगों सोचे कि ये जी डेनमार्क से है, ये भी इनका इनका सोच भी है कि इनके तरह है, कि ये भी इस तरह करते हैं। फिर वो उससे थोड़ा डरे हुए थे, इन फजूल लोग जो डेनमार्क में इन्होंने किया था। पर क्या कहते हैं, जब वो थोड़ा नीचे चला गया था और कॉल आ पाई थी, फिर मैं तो जरूर गया था। क्लब को कह के जी, क्लब कह रहे थे नहीं तूने नहीं जाना, मैंने कहा था जी देखो जो आपको, मैं जा रहा हूँ। और मुझे याद था मैं गया था, और इंजरी लेके भी घर आया था, और वो क्लब ने मुझे कहा था तू जाएगा, यू विल लूज योर स्पॉट, इफ यू गो यू विल लूज योर स्पॉट, बिकॉज मुझे याद था हम गए थे तकरीबन 1.5 महीने गए थे, और क्लब ने कहा था इफ यू गो यू लूज योर ये स्पॉट, एंड आई लॉस्ट माई स्पॉट, आई रिमेम्बर। अच्छा, ये जो आप जाने की बात कर रहे हैं, जो जो मुझे समझ आई, ये वो 2011 वाली ओलंपिक टीम की आप बात कर रहे जी हैं, जब पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से क्वालिफाई खेला था। जी। बट जहां तक मुझे भी याद है, उससे पहले भी आपको पाकिस्तान के लिए अप्रोच किया गया था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2010 की एशियन गेम्स में आपका नाम था स्क्वाड के अंदर, यस। और आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन लास्ट मिनट इशू हुआ था, जिसकी वजह से आपको इंक्लूड बिल्कुल। किया गया था। और उसकी वजह से, क्योंकि आपकी एज उस टाइम पे अंडर 23 थी, और आपको एज फर्स्ट चॉइस गोलकीपर यूज करना था, जिसकी वजह से जब आप नहीं गए तो फिर जाफर खान को इंक्लूड किया गया एज द ओवर एज प्लेयर। और उसकी वजह से आई थिंक पूरा स्क्वाड ही ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि जो 3 ओवर एज प्लेयर्स थे वो जो लेके जाने थे वो भी नहीं लेके जा सके। हम्म। तो आपका फिर आपको अप्रोच किस ईयर में किया गया था पाकिस्तान की टीम की? ये भी 2010 में था या 9 में था या कब था? मेरा ख्याल है पहली दफा 9 में था, कि इवन 8 में था, जब जब एक एक यंग लड़का था उस जमाने में, जिसका नाम था मोहम्मद शाहनवाज, है ना, नाम मोहम्मद शाहनवाज। उसने मुझे अप्रोच किया जब मैंने मेरा डेब्यू खेला था। उसको हमेशा ही पता है यार कौन से प्लेयर्स किधर थे और किधर नहीं थे। उनको उसने मेरे भाई को भी अप्रोच किया था, और उनने क्या कहते उसने क्या कहते उस जमाने जॉर्ज कॉटन को बताया था कि देखो ये यूसुफ भट्ट है। और उस जमाने में उन्होंने ऑलरेडी में 7 8 में था, याद नहीं, जब जॉर्ज कॉटन कोच थे। और जॉर्ज कॉटन ने बिल्कुल, 2009 और में। जॉर्ज कॉटन ने मुझे फोन किया था पहले दफा। अच्छा, हम्म। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब आपका फाइनली डेब्यू हुआ तो तारिक लुत्फी कोच थे उस टाइम पे। जी 2011 में आपका ओलंपिक टीम में डेब्यू हुआ, और आपने आई बिलीव पहला मैच खेला जो कुआलालंपुर में था, जी। अच्छा खासा क्राउड था। तो वो कैसा एक्सपीरियंस उफ। था, एक ओलंपिक क्वालिफाइंग में राउंड में पाकिस्तान के लिए खेलना, वो भी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, हम्म। इतने ज्यादा लोग देख रहे हो जब? बहुत मुश्किल था, मुझे याद है बहुत मुश्किल था, इसलिए फुटबॉल स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट। और उस जमाने में हमारे, इट्स सेफ टू से दैट हमारे जो कोचेस और जो सब लड़के जो हमारे टीम वाले थे, दे हैड सम एक्सपेक्टेशंस कि देखो जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, इन्होंने रोनाल्डिनियो से भी और अच्छा होना है। थोड़े unrealistic high expectations थे to this 19 20 year old kid। हम्म। और क्या कहते हैं, मुझे खुद ही याद था कि अभी तक आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उन्होंने 2 गोल किए थे, और उन्होंने मुझे हाफ टाइम पे निकाला था। मुझे खुद ही याद था, और कहते हैं ये आपने रोकना था। एक तो टॉप बिन्स में था, एक टॉप बिन्स था। टॉप कॉर्नर जो मारा था वो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी गोलकीपर सेव कर सकता था। और मुझे खुद याद है कि उन्होंने कहा था भाईजान आप यूरोप से आए हैं, आप ये टॉप कोने वाला बॉल क्यों नहीं लेते थे? तो भाईजान उन्होंने पूरे ऊपर मारा था, मैं किस तरह ले लेता? अब मुझे याद था, हमने बहुत से स्टेरियोटाइप्स और बहुत हमने खुद ही भी हमने ये भी नहीं कि खाली लोग, हमने भी खुद ही सीखना था कि जी पाकिस्तानी कल्चर का वे ऑफ स्टाइल किस तरह है, पाकिस्तानी फुटबॉल में कल्चर किस तरह है, पाकिस्तानी कल्चर में स्पोर्ट्स में क्या कहते हैं स्पेशली प्लेइंग स्टाइल किस तरह होता है एशिया में कंपेयर टू यूरोप। जमीन और आसमान का डिफरेंस।
बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। और आपको उसके बाद तारिक लुत्फ़ी ने सेकंड मैच के लिए इंक्लूड नहीं किया गया और हुँ, आपको जब बताया गया, आप ऑब्वियसली उसके बाद डेनमार्क वापस चले गए, हुँ। तो आपको लगा, मतलब आपको लगा कि क्या यार ये तो लगता है चैप्टर अभी से क्लोज़ हो गया, या आपका क्या रिएक्शन था जब आपको वापस भेज दिया गया और आपने टेक्निकली एक हाफ ही खेला था सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए पहले? बिल्कुल। नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं। देखो फुटबॉल इज़ फुटबॉल। जो होता है अच्छे प्लेयर्स जाते हैं बाहर और वो नेशनल टीम से जाते हैं बाहर। आप भी आपने देखा था, क्या नाम है उसका, ये चेल्सी हकीमी, बिल्कुल, शरीफ, क्या नाम है उसका, ये जो चेल्सी का राइट विंग जो मोरक्को से, बिल्कुल, बिल्कुल, स्टार प्लेयर था, वो निकल गया था पर वो वापस आ गया। इस तरह के कोचेस के साथ कोई कोचेस सोचते हैं कि ये अच्छा प्लेयर है, कोई नहीं सोचते कि ये इतना अच्छा प्लेयर था। और उस जमाने में कितने कोच तारिक लुत्फी ने सोचा कि जी ये मेरा स्टार का गोलकीपर नहीं है, फेयर इनफ। और मैं वापस गया और मैंने फोकस ये नहीं किया कि ये हो गया था। आई जस्ट वर्कड ऑन व्हाट आई कुड एंड प्ले द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद मैं जाके फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बन गया था। We went down to the second division. I was the youngest goalkeeper in the entire pro leagues, playing regular. I was playing every single week, week in, week out. You see this day today, 33. I have over 450 professional caps, still going, playing, do my best. लोग ये सोचते हैं कि जी नहीं, ये बेइज्जती होगी, ये फुटबॉल इज नथिंग टू डू विद बेइज्जती। फुटबॉल इज नथिंग टू डू विद किसने मुझे ये किया, मैं नहीं आऊंगा, ये नहीं आएगा, ये मेरे से, ये मेरा हुआ है। Football, Pakistan national team is bigger than any coach, than any player, bigger than me, bigger than you, bigger than any coach there is. So, when I had the chance to be called up again, I was extremely honored. I was hesitating. I was hesitating, uh, but this time I had Hassan Bhai and my brother Muhammad Ali with me as well. So it was a different ball game, and we had each other to spin off, and being able to cope with the differences. And I knew what I was going into now. So I had another, a completely other facade, and Alhamdulillah, I can say that especially Hassan Bhai and I and Muhammad Ali, we made a huge impact on the understanding on how you should you should act on a national team, how we should come together as a team, because we had this foreign players, local players. एक्सक्यूज माई उर्दू, बहुत बड़ा बकवास बात जो मीडिया ने बनाया था। इट्स जस्ट टू डिफर। अब देखो, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन भाई मैं पैदा हुआ हूँ कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए, देखो हम सब पाकिस्तानी हैं। पूरे मेरे ब्लड्स, आपके जो हमारे सब खून है, पाकिस्तानी खून। कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों कहते हैं नहीं, ये और बेहतर है, इसलिए इसने इसने लाहौरी में खेला है, इसने उधर खेला है। भाईजान, मैंने भी फुटबॉल खेला है, मैंने भी फुटबॉल खेला। मैं तो नहीं आपको कह रहा कि नहीं, इसलिए मैं यूरोप से आया हूँ, मैं ही खेलूंगा, कि जो यूरोप से आए उन्होंने नहीं खेलना। नहीं, जो पोजीशन का जो बेस्ट प्लेयर है, जो मुल्क के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो खेले। और हमने, आई एम वेरी प्राउड टू से, जो हमने किया था, हमने टीम को जेल साथ किया था कि देखो कि हम एक टीम है। हमने सब इन स्टेरियोटाइपिंग्स को खत्म किया था। फिर ऑफ कोर्स ये जो नहीं हम खत्म नहीं कर सकते, जो आउट ऑफ रीच, वो तो पॉलिटिक्स था। उसका हम कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसका हम कुछ नहीं कर अच्छा, सकते थे। पॉलिटिक्स पे जाने से पहले एक वो बड़ी अच्छी एक स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी हमारी। आप तारिक लुत्फी के अंडर 2011 में खेले और उसके बाद नवंबर 2011 में हमारे नई कोच अपॉइंट हुए सर्बिया के ज़िवीसा जी। मिलोसेविच, और 2011 के सैफ चैंपियनशिप में वो टीम को लेके गए। पर कहा यह जाता है कि टाइम इतना शॉर्ट था और वो टीम ऑलरेडी सेट थी कि डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस नहीं हो सकी। वरना एक्सपेक्टेड था कि कम से कम आपको और हसन बशीर को मौका मिलेगा उस सैफ चैंपियनशिप में हम्म। खेलने का, जो इंसिडेंटली इंडिया में ही थी। बिल्कुल। उसके बाद 2012 आता है, पूरे तकरीबन साल ज़बीसा भी ज़्यादा अंडर 22 टीम के साथ काम करते रहे, और बाय 2012 के एंड पे पाकिस्तान ने सीनियर टीम का मैच अरेंज कराया जो सिंगापुर हम्म। के खिलाफ था, इन सिंगापुर एज वेल। और उसमें फिर हसन बशीर, मोहम्मद अली, आपका जो है क्या कहते हैं, शबीर खान। पहला सीनियर इंटरनेशनल मैच था हम्म। जिसमें आपको मौका खेलने को मिला, और 1.5 साल के बाद यूर बैक विद द नेशनल टीम, और वो भी अब सीनियर नेशनल टीम में।
जिसमें अब हम देख रहे हैं कि डेनमार्क से भी अब काफ़ी प्लेयर्स आने शुरू हो गए हैं। उस ज़माने में तो एक नॉर्वे से भी प्लेयर आए थे उमा मलिक, बट ऑब्वियसली वो आगे ज़्यादा नहीं चल सके। बट आप, मोहम्मद अली और हसन बशीर तो एक रेगुलर मेनस्टे बन गए उसके बाद नेशनल टीम का। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था वापस आना नेशनल टीम का, और फिर उसके बाद प्लेइंग अंडर द वीसा, वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, हम्म। सर्बियन एक्स आर्मी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो है, वो तो मजा का था जविशा। यू नो, जविशा का एक चीज तो मुझे, one thing I liked about him was that he was very hard, he was very fair, he didn't favorize anyone. Maybe except Hassan Bhai. You know, every coach has, I don't know why, everybody has favored Mr. Hassan Bashir Bhai. You know, भाई वो गोल मारता है ना, I, इसलिए सबका लाडला, so वो गोल मार देखो, देता है। everybody would have strict rules. Every single coach that we've had, you know, कसम से everyone, every single coach we had, everybody would be on equal foot and strict. Only Mr. Hassan Bashir Bhai would be able to do whatever he wanted. बिल्कुल, उनको फ्री रोल मिलता था ना भाई, आप जाएँ, आप गोल मारे, बाकी सबसे हम आगे, मेहनत अगर कराएँगे आप पिच पे। लेट भी आओ डिनर के लिए, जो भी आपकी मर्जी है, डजंट मैटर। चलो ये अच्छा स्ट्रगल था, बट ज़बीसा के अंदर हमारी टीम डेवलप होनी शुरू होगी, हम्म। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम था गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अंडर ज़बीसा उस मैच में भी आपके पास जाफर खान भी जी। ऑप्शन थे, और अगले कुछ मैचेस में क्योंकि जाफर खान की सर्टेन एज हो चुकी थी, एक वो लेजेंड रहे, ऑल टाइम टॉप अपीयरेंस मेकर हैं हम्म। पाकिस्तान के विद 44 अपीयरेंसेस। आपका और उनका जो है मुकाबला चल रहा था फॉर द हम्म। गोलकीपिंग स्लॉट नंबर 1 के लिए। यस। और अगले ही कुछ मैचेस में जब पाकिस्तान ने 2 फ्रेंडलीज खेले नेपाल से, और उसके बाद मालदीव से भी 2 खेले, उसके बाद नज़र आ रहा था कि अच्छा आप भी इमर्ज कर रहे हैं एज़ द फर्स्ट चॉइस। हम्म। और उसके बाद जब हम एएफसी चैलेंज कप क्वालीफायर्स में गए, तो आई थिंक उसके बाद एक एस्टैब्लिशमेंट होगी कि आप ही पाकिस्तान की अब नंबर 1 गोलकीपर होंगे गोइंग फॉरवर्ड। हम्म। तो वो बीच में ये जर्नी कैसी रही, और ये इतने सारे मैचेस जो पाकिस्तान को मिले, खास तौर पे ये चैलेंज कप क्वालीफायर्स, हम्म। ये कैसा एक्सपीरियंस फिर आपके लिए रहा? बहुत अमेजिंग था। एक तो लाला थे ना, ये जाफर जाफर खान हमारे लाले, लाला जी, लाला साहब जो बहुत अच्छे गोलकीपर, बहुत अच्छे गोलकीपर। और कहते हैं, आप देख सकते थे कि अगर अगर जाफर खान के पास सही कोचिंग होता था, ही वुड हैव गॉन by far to other leagues as well, and played in the Asian leagues. For him, it was very unfortunate that he didn't have those opportunities because he was an amazing goalkeeper, and it was an honor to play with Lala. And also to see, because one thing I want to say about him, because after in my career I have also been a lot of captain in my club teams as well, and 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 the way that everybody respected Jafar Khan, and how he utna batna, as we say in Urdu, as a captain, as a leader. It was very inspiring me, and I have taken a lot of that to me when I am captains in my club teams, to and to take over from Jafar. And there was no, he helped me all the way and say, okay, now it's you. And I've been honored to do that. And yes, Lala has the record, and I have a plan of breaking that record, inshallah, as well. So now, we came to Challenge Cup. We At that point, Pakistan football had developed a lot under Zavisa. We were playing these teams. Yes, we played against Kyrgyzstan. We lost 1-0 in a very hard fight. We played Tajikistan. I played an amazing game there, actually. So you're not right. I also had a man of the match in that game. I'm quite sure I didn't I? But chalo, that's ये that's another. किर्गिस्तान वाला मैच था जो सुनने में आता है, और याद जो मुझे पड़ता है कि आपको मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिली थी। अब वो पाकिस्तान ताजिकिस्तान से भी 1-0 हारा, Yes, 89th मिनट में गोल yes. पड़ा था, उसके बाद किर्गिस्तान में पहले मिनट में गोल पड़ा था, जी, और उसमें मोहम्मद अली का गोल भी डिसअला हुआ जी, था। बिल्कुल। और फिर हमने आखिरी गेम जीत गए थे ना। और क्या कहते हैं, अब देखो ना, अब आज देखो, उस जमाने में हम सब इक्वल थे। इंडिया से भी खेला था उसने सैफ कप में। हमारा लेवल बहुत अच्छा ऊपर जा रहा था उधर। अभी एज अ टीम as well, we also had Adnan Ahmed, amazing midfielder. We had a really, really, really good team. And we had strong young players. We had Saddam, we had Adil, we had Faisal, we had Riaz, we had all of these boys. It was really young. सलीमुल्लाह। Kalimullah as well. Yes, sorry.
don't forget the legend of them all, Kalimullah, who also all were emerging. And all of these boys you were seeing, they were going abroad and playing in Kyrgyzstan, and they were playing in Bishkek, I think it was, and they went to Yes, yeah, Kareem, Adil, yes, Saddam, बिल्कुल. and Ahmed went to क्या नाम है, Bahrain. Bahrain, and people were getting out, we were getting proper structure, and the most important thing, why we were getting better is also because the local leagues were getting better. You were seeing KRL playing AFC Cup. I still remember I was watching Mahmoud's goal on the corner. He flicked it all the way in. You know, that's the most important part. The structure, the infrastructure. Now they're just playing in random tournaments and coming up and having 3 months camps for the national team and coming in shape there. You shouldn't do that. You should be with your teams like in the back in the days with KRL, with when the boys were in Bishkek. They came together for the national team. All the fitness, all the come together, all everything, it was done in the clubs. And this is how you do it in a professional setup. This is actually when you go in your clubs, you do your everyday work, and then from there you set the scene. बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब ये टीम 2013 की एक बननी शुरू हुई और हमारा टारगेट था सैफ चैंपियनशिप का, एएफसी चैलेंजर क्वालिफायर्स में हम आगे नहीं बढ़ सके, रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं थे इतने। पर उसके बाद आगे जब हम सैफ चैंपियनशिप में पहुंचे, हमारा एक अफगानिस्तान के खिलाफ फ्रेंडली मैच था जिसमें सिर्फ लोकल प्लेयर्स ही गए थे जी काबुल खेलने के लिए, वो एक टफ हिस्टोरिक मैच था। पर उस मैच के बाद हमारे कोच जवीसा मिलोसेविच जो पिछले तकरीबन डेढ़ दो साल से काम कर रहे हैं, उनको सैक कर देते हैं। यस नया कोच आता है मोहम्मद अल शमलान ऑफ बहरीन, आपके बड़े पसंदीदा दोस्त। यस उस टाइम पे शहजाद अनवर वाज इन चार्ज ऑफ द टीम और शमलान साहब साथ गए थे। बट आपका मेन कोच सैक हो गया, आप दोबारा से आप चैंपियनशिप में जा रहे हैं खेलने, तो इसका इसका क्या इफेक्ट होता है टीम के ऊपर जब वो एक सर्टेन सिस्टम और एक सर्टेन पर्सनालिटी के अंदर खेली और एकदम से दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इन इन अ मेजर टूर्नामेंट? बहुत मुश्किल था इसलिए टीम ने दे हैव जेल्ड टुगेदर उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग था किस तरह खेलना है फिर एक बिल्कुल दूसरा बंदा आज अंदर आता है कि जी मेरे पास ये आइडियाज है और one thing you need to know is that that's very easy if you have players that are educated मतलब जब मैं कहता हूँ educated in systems हमारे लड़के local लड़के educated in systems नहीं है I'm not offending anyone by saying that being able to work around systems 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3, all of these things, how you go high pressure, low pressure, shifting side to side, how to move around, all of these things is paramount to have backbone. I have been doing this, I've had trainings for weeks and weeks and weeks when I was 10, 11, 12, 13, 14 years old where the coach would just sit us there and then we would just walk from it. And so if this guy comes here, you go here. If that guy comes here, you go here, you go here. Our players did not know the basics of this. And then you get a new guy in trying to, of course, put his view on the things. It, of course, interrupts in that sense. But still, we made a good performance. But I feel that we could have gone all the way with that team. I think that team was a bit unlucky. I think इन हाइंडसाइट इफ वी हैड मोहम्मद अली, अगर मोहम्मद अली इंजर ना होते उससे पहले अगस्त में एंड अगर वो स्क्वाड में होते, आई थिंक पाकिस्तान वुड हैव गॉन ऑल द वे इन दैट टूर्नामेंट। कम से कम फाइनल तक का पोटेंशियल था। और हम ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहला मैच तो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, दैट इज प्रॉब्ली पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया इन लॉन्ग टाइम, जिसमें हमने 1-0 ओन गोल भी खाया, वो अगर आपको याद हो जो कंफ्यूजन हुई थी बैक लाइन में। Yes. और उसके बाद 80 मिनट्स के लिए आपने हैमर किया इंडिया को एंड यू मेड अ कपल ऑफ सेव्स दैट वर रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि उस मैच में सुनील चेत्री भी खेल रहा था एंड यू डिड नॉट लेट हिम गेट ऑन द स्कोर शीट। नहीं तो वो मैच कैसा था? Oh, पाकिस्तान इंडिया का ये आपका पहला भी एक्सपीरियंस था, तो yeah. व्हाट इज इट लाइक प्लेइंग इन अ पाकिस्तान इंडिया I मैच? still think it's the biggest game of my career. It's the biggest game together with the Cambodia game, I would say, because it was Pakistan, India, it was life death, and of course the other SAF Cup was also really, really a big game, but again, it was not India's strongest side, but this was mano and mano strongest sides, Pakistan, India, and the hype was there. We were living at the same hotel. We were staring each other down. It was amazing. It was absolutely amazing, and it was so fun. And I remember afterwards, Sunil Chetri and I, we had a really big fight in that game. Like I think he had like
three, four, five open chances. I remember there's still videos online where saying Yousuf Butt against Sunil Chetri, and it was a fun game. It was a fun game. एंड अच्छा वो फन गेम के बाद द एक्सपेक्टेशन स्टार्टेड राइजिंग नेपाल वाला मैच था नेपाल 30,000 Ah, people in the yeah. stadium and they are going mad and Nepal is obviously they play a possession style of football वो possession रख रहे हैं अटैक पे अटैक हो रहा है डिफेंस इज होल्डिंग Mm, एंड आपने काफी ज्यादा सेव्स किए थे उस मैच में टू yes. कीप एटलीस्ट द स्कोर लाइन लेवल Mm, बट आखिरी मिनट में आपको क्या कहते हैं एक 14 साल के 15 साल के बच्चे ने yes. आके गोल मार दिया और Mm, उसमें भी अगर आप वो फुटेज देखें तो यू ट्राई टू क्लेम द बॉल बीच में नेपाली प्लेयर्स भी आए mm. तो डू यू थिंक दैट यू शुड हैव गॉन इन मोर हार्ड एंड ट्राई टू नॉक एवरीवन आउट ऑफ इट और खुद भी लग जाती या बस फिर ऐसा होता है फुटबॉल में कि ये जब किसी का लिखा होता है तो वो वो मार तो देता है गोल लिखा होता है ना, अब क्या कर सकते हैं, बल्कि कहते हैं नहीं, but I was 100% a free kick. I was 100% key. I ran, claimed the ball, got it cleared afterwards, and then they score on the rebound. I remember, right? And it was a big game. I remember, and they were just hammering us for 90 minutes. They were pressuring and pressuring and pressuring. There was a goal chance every single attack almost. I remember they were really hammering us, and we of course we had Hassan Bashir up front to do magic. I think we had what, three, four shots on target, and then Hassan Bhai came in and just smashed it up in the nets. So yes, and then we drew that, and that was really disappointing. बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमारा मतलब मोरलेस हमारी फेट अपने हाथ से लिख ली हमने अगले मैच में बांग्लादेश को भी हरा दिया या वेरी यंग साकिब हनीफ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू Mm, प्ले इन दैट गेम एंड सैफ चैंपियनशिप हमारा वही हुआ वी couldn't go past on goal difference same goal scored same goal against same head to head पे हम आउट हो गए इंडिया yes. से और हम वापस आते हैं और थैंकफुली उस जमाने में पीएफएफ ने अगली ही विंडो में फिलीपींस पीस कप का इनविटेशन सिक्योर कर लिया Mm, तो यू गाइस गो टू फिलीपींस एंड जो मुझे भी याद है जो मैंने भी देखा था आई थिंक दैट वाज द टाइम वेयर यू कुड सी कि ये टीम क्योंकि एक कोर टीम 7 मैचेस खेल रही है उसमें एंड विद mm, दिस फिलीपींस पीस कप वी प्लेड लाइक 13 इंटरनेशनल गेम्स इन 1 ईयर और उसके साथ साथ most of this squad is from KRL as well. KRL has a very good run in the AFC Presidents mm, Cup जो फाइनल में जाते हैं तो वो कोर आपको नजर आ रहा था एक्सपोजर का कि यार ये टीम बन गई है mm, 2013 में एंड दैट्स व्हाई यू एंडेड अप बीटिंग चाइनीज टाइपे एज वेल वे यू वर द मैन ऑफ द मैच mm. तो आपको क्या लगता है कि ये टीम जिस तरह हमारी फुटबॉल में प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए ये एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है रेगुलर E- मैचेस का और फिर Exposure is क्या everything. इफेक्ट होता है इसका टीम पे Is everything. Now we have an entire new team, and football. People are training every single day with each other. They are training every single day. When you do not train, you just get behind. And our boys are not training. They're not training. They're training a little bit here, a little bit there. Then there's a little bit tournament here, a little bit tournament there. Back in the days, the Pakistan Premier League was just on it. Every single time it was on it. You had the Challenge Cup, they were on it. They were playing the FC Cup, they were on it. All the boys were playing in the same team. You had us boys coming from abroad. Also, all of us were playing. We were getting really good. We were getting competitive. And you see Philippines now, they had a Bundesliga player even, and we lost 2-1. We had a Stephen Schrock. yes, and we had a really good run, and it was a 50-50 game. We weren't people were not dominating us anymore. We were a 50-50 game, and we were dominating them. We were playing good football. Well, not good football. We were playing better football because you need to. It doesn't come over day. You need to go in and impact slowly by slowly, and that's also with the team now. People expect, oh, they should beat Maldives. They should beat Nepal. Yeah, देखो समझो, these boys have not played football for 2, 3, 4 years. A lot of these boys have never played in a stadium before. They've never even played in a stadium before. They never even played a televised game before. And now they're standing towards international players who are making several $1,000s, who are actually been in the game for 10, 15, 20 years. And the exposure and the tempo and everything and how to interact, how to react. They don't know that. But and then people expect, oh, they should just win. Now the team now, inshallah, also will be a completely new team. It is a new team and it's building up.
But inshallah, our target is the World Cup qualifiers, and these two tournaments will inshallah will really, really, really shape the team. And also with the with also experience is really important. And you see with our coach as well, Mr. Shazad Anwar is also really important because he has been a part of the team for a lot of years. He's seen a lot of coaches. He has also formed. He knows how to play. He knows how to set up games. He knows how to set up his players. He knows how to interact towards everything and how we can get the best out of it. बिल्कुल। तो अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह आपने बात की, द टीम इज शेपिंग अप, वी आर Mm, डूइंग वेल, एंड दैट गोल अगेंस्ट फिलीपींस वाज रियली नाइस। चाइनीज टाइपे को हम हरा भी देते हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी सीइंग सम रिजल्ट्स, राइट? mm, आपका नेपाल के खिलाफ ड्रॉ, बांग्लादेश विन अगेंस्ट चाइनीज टाइपे, सो वी गेटिंग देयर। एंड देन right. ऑल ऑफ अ सडन हमारे कोच जो हैं बहरीन के, मोहम्मद शमलान, वो कंप्लीटली हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं Mm, अगले मैचेस में। 2014 में वी प्ले अगेंस्ट लेबनान इन बेरूत, वी लूज 3-1, बट नो वन इज कॉल्ड अप, नॉट न्यू, नॉट हसन बशीर, नॉट मोहम्मद अली, नॉट रिजैश रहमान। mm, We similarly play in 2014 June. We play Indonesia. Nobody's called up. mm, Asian Games. We go to the Asian Games in September again. No one's called up, and everybody's asking these questions. कि यार एक team बन रही थी, the complete is completely dismantled mm, for no reason. It's not even a generational change. I think all of those players were hitting their prime, and suddenly they're not called, right? mm, Or then you play a home game against Palestine as well. और ये सारा कुछ चलता जा रहा है. And in 2015 you have a World Cup qualifier. एक डेढ़ महीना पहले we see कि there's a U-turn from Mohammad Shamlan. We see Hassan Bashir being called up. Hassan Bashir plays against Afghanistan at home. The crowd goes absolutely mad after seeing him. He's named the captain. He inspires Pakistan to a very unexpected victory. और अच्छा, नबील असलम आ गए, मोहम्मद अली आ गए, हसन बशीर आ गए, but Yousuf Butt is not called for a World Cup qualifier, which would have been probably your biggest game at that time. mm, And we're playing Yemen, and Muzammil is given a chance. And पहले minute में Muzammil concedes a penalty in a World Cup qualifier mm. against Yemen, completely unnecessary. अगर आप footage देखें, how did that make you feel? Of course, I was disappointed, but I was supporting the team all the way. As I said, football is Shamlan. I don't know why, but he felt like that he only should because again, I think he was influenced again by the media as well because everybody was foreign players. We've always had this, foreign players, local players, foreign players, local players, and he goes, "Yeah, you know what? I'm a great coach." He was a great coach. I'm not saying he was not a great coach. He was a great coach. He is a great coach. I can only do this with local players. And then when the World Cup qualifier comes, he goes, "Oh, maybe I can't only do it with local players," and then brings in Hassan Bashir and brings in the three players, right? There was Nabil, Mohammad yeah, Ali, Muhammad, Nabil but Aslam. Muhammad Ali only comes in. He also didn't bring in Muhammad Ali. Muhammad Ali comes in because we were playing club level together, and he comes in on the day. He flies 48 hours on the day to play that World Cup qualify game against Yemen, the first game. He had Yeah, flown 50 plus hours to play that game because again Shamlan changed his heart the day before the game or the 2 days before the game, got him in. He played horrible because he was all fully jet lagged, and then he dropped him for the next game. And then we end up losing, right? So yeah. So that's football for you. never just really made Oh, sense. And चलो ये तो this was सो जस्ट कंटिन्यू जहाँ से हम छोड़ के गए थे। हम बैठे दोनों एक डेनमार्क में और यूके में हैं, बट टेक्निकल डिफिकल्टीज यहाँ पे भी आ जाती हैं, और बस हम यहाँ से आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को। तो यूसुफ से पहले बात यही यहाँ हमारी चल रही थी कि जब पाकिस्तान पे बैन भी लगा और उसके बाद mm. वापस वो तो डेनमार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक सॉर्ट ऑफ विल्डरनेस थी, ना नेशनल टीम था ना कुछ और था। तो वो 3 साल आपने कैसे गुजारे, या आप क्या करते रहे डेनमार्क में? Yes, Alhamdulillah, I have been very blessed and lucky that I was not affected. And a lot, I can see a lot of the boys' careers went to waste.
I was very fortunate, so I was just focusing on the pro level football here, just concentrating on getting better and getting higher and higher and doing well at club level. And alhamdulillah, you know, I was uh, I was bouncing back and forth. I was trying to get back to the first division, and I was in the second division where I was a profile there, and then I got the chance to get back to the first division in Brunswick again, and came back to the first division. And you know, as I said before was my luck that people got injured, and you know, and when I came to Brunswick, well, it was the other way around. My luck turned around, and I was brought in to fight for the first spot, to become, inshallah, the first spot. I was brought in as for the first spot in the first division as well. Uh, Ended up getting injured and missing the preseason, coming in, and then and then the team doing really well, and me not getting back into the team. And then the team went on getting that was, I think, after 1.5 year, I think, of the band. And then after then I stayed there for 1 full year as a backup, and was trying to fight my way in. Okay, okay. So this is going on in between, and obviously Pakistan is not playing at this moment in time. But 3 years later, when this ban ends and the PFF is restored, in that sense, Pakistan दोबारा SAT championship में जाता है. You are called up. We get an interesting group. We have Yes. Nepal, we have Bangladesh, we have Bhutan, and we get an opportunity to play football once again. And during that tournament, you make the most saves, and you pull off some very crucial saves for Pakistan as well, and you're back in the national Hmm. team. 3 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना, Yes. और उसके बाद एक दोबारा साइकिल में आना कि Yes. अच्छा वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए प्रिपेयर करना है. Yes. And under the new coach, Brazilian Jose Antonio Nogueira, you become the undisputed number one as well. So how does that feel when you've been through so much and you finally get back to what you want to? Oh, that was amazing. You know, the most important thing, like I said before, everything has a red thread to everything, right? It was on club level, it was going really well. We were back at it. We were playing at the top of the second division. I was playing every time. I was starting there when I think I was 27, 28, starting becoming captains of my teams as well, and doing really, really well. And then the national team was coming along again, and I was in a really good flow, and alhamdulillah, we also got Shadad Saab and Jose in it, so it was a really good coaching team as well, and the players that have been there, it was also the boys from back in the day, so we knew each other. It was with Saddam, it was with Adil, it was with Sadullah, it was with Naveed in the defense, hard rock defender. It was a lot of the guys where we knew each other. So we were actually, so even though that we have had 3 years span, we hadn't played, we came in for the SAFCOM and we did amazing. We went to the semis, but the main thing was the challenge. If the boys, because half of the team, 70% of the team hadn't touched a football for 3 years. So by doing that, I don't think people grasp and understand how big of achievement that actually was. You have 70% of the boys not playing football for 3 years. And you're having all these teams that you're playing, they're playing day in, day out. They've played 60, 70 national team games in that. Like, let me give you an example. I have a good friend of mine, Jamal Buyan, the captain of the Bangladesh team. He has played now takriban what, 70 national team games? 70, and All-time top appearance maker for Bangladesh. mm, He's playing his domestic football in the Bangladesh mm, league for SAF Sporting. He moves from one club to the other. mm, He seems to be getting all of the hottest adverts. You could sometimes see him in a Coke ad or mm, a new ad for a new shampoo or a hair conditioner.
थोड़ा सा दिल पे लगता होगा कि Yeah. यार ये मतलब, एंड फ्रॉम व्हाट आई नो यू वर द वन दैट रेकमेंडेड जमाल Mm, भूयान टू द बांग्लादेश फेडरेशन yes. एज वेल, एंड वो भाईजान टॉप पेरेंट्स मेकर बन चुके Yes. हैं। बीच में हमारा बैन रहा है, कभी आप खेल रहे हैं कभी नहीं खेल Mm, रहे, और उधर वो एडो में आ रहे हैं। yes. तो ये और क्या होता है? ये मेन लिया कि बांग्लादेश की जो एक तो लीग है, एक तो नेशनल टीम, पाकिस्तान is 10 times better. And you know, we're just looking at each other and just sitting, and I'm just Hassan Bashir and I always just look at each other and compare with Bangladesh and say, what is going on? What is going on in Pakistan? Why is it that we cannot benefit off each other as Pakistanis? And always thinking about politics and one thing, another thing, and a third thing. And you know, even there, we still come in and we still go to the semi-finals. We beat them out. We beat Nepal out. And we do amazing. And alhamdulillah, I have a really big role in having, I was the best goalkeeper in the tournament, and have the most saves. And to get that achievement for the team, I don't think people still don't grasp how big of achievement that was. But that was, I would also say, it was because of the continuality of the team. It was the same players, we knew each other. So even though there's been so many years, we were fighting side by side like brotherhoods and really bouncing off each other, which meant a lot. Which means like relationships in football is is will be talent. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहता है। वी प्ले अ फ्रेंडली अगेंस्ट पैलेस्टाइन इन पैलेस्टाइन, एंड आई Mm, थिंक ये हिस्टोरिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ पाकिस्तान की कोई भी स्पोर्टिंग टीम है, आई थिंक द फुटबॉल टीम इज़ द ओनली वन दैट हैज़ एक्चुअली गॉट अ चांस टू गो टू पैलेस्टाइन, mm, और नंबर ऑफ टाइम्स आप वहाँ गए हैं। mm, आप लोग सारे जब गए हैं तो आई हैव सीन पिक्चर्स भी मैंने देखी हैं, आप mm. लोग मस्जिद अल-अक्सा में जाके Yeah, नमाज़ पढ़ रहे alhamdulillah, yeah. होते हैं, जुम्मा पढ़ रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ माशाल्लाह एन अमेजिंग एक्सपीरियंस जो पाकिस्तानीज़ तो कर ही नहीं नहीं, सकते बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे जाना, क्योंकि वो इसराइल के अंडर आता है तो जाना ही Mm, पॉसिबल है। आप लोग को स्पेशल क्लियरेंस मिलती है टू प्ले अ मैच, mm, और आप लोग जाते भी जॉर्डन से हो। बट जब भी मेरी और आपकी भी बात हुई इस टॉपिक पे, आपने मुझे कहा था, मेरी बात मेरे साथ रही भी, कि दैट पैलेस्टाइन गेम वी लॉस्ट टू वन, बट हसन बशीर स्कोर्ड दैट गोल, प्रोबेबली द बेस्ट गोल आई हैव एवर सीन पाकिस्तान स्कोर। बिल्ड अप देखें, हसन का टच देखें, बट यू सेड दैट्स द बेस्ट पाकिस्तान टीम दैट यू प्लेड विद सो mm. फार। व्हाई वाज दैट? Yes, 100%. We had so many good players. We had a really good team. The team had played together for a number of years. The team had played tournaments. They were starting to get results in. And we were 1-0 up. It was a friendly game, so we started substituting a lot. And if we would have kept our starting 11, I guarantee you we would have won that game. I guarantee you we would have won that game. And you know, this that was the strongest side because you know the relationships, the build up, the team players, the players in between each other. And here, there was still no football in Pakistan. And even with that, we were actually having a really, really strong side. So imagine if we can get our stuff together and have a league, just like, let's say, like in Bangladesh as well. We would go so much ahead because we have so much more talent in Pakistan. बिल्कुल, एंड इसका इस टीम का अनफॉर्चुनेटली आप कह लें कि आगे नहीं बढ़ सकी। Mm, 2019 में आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर आता है कंबोडिया के mm, खिलाफ। अगेन हमारी जो किस्मत है ड्रॉ की, हमेशा कुछ ऐसी टीम मिल जाती है, कभी यमन मिल जाती है, कभी इराक मिल जाती है, कभी कंबोडिया मिल जाती है। एंड हमारे बहुत सारे लोकल प्लेयर्स सद्दाम वगैरह को मौका नहीं मिलता, दे कांट जॉइन द टीम बिकॉज इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स ही चल रही है, दो फेडरेशंस बनी हुई हैं, एंड वी लूज दैट mm. मैच। एंड दैट मैच वुड प्रॉब्ली, हमारी जो किस्मत है ये जो अगले 3 साल है वो सारे सेट हो जाते अगर मैच जीते। व्हाट हैपेंड इन दैट मैच एंड व्हाट डू यू थिंक वी देखो कुड हैव डन देखो अबाउट बात दैट? बात वेरी सिंपल है, बात वेरी सिंपल। हमारे पास कोई अनलक ड्राइंग नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जो अगर हमारा अपना टीम होती जो फ़लस्तीन गई थी, जिसने सैफ कप खेला उससे फ़लस्तीन गई थी, अगर हमारा वो टीम होता हमने कंबोडिया को इजीली हराना था। इजी इजी। देखो हमारे पास कोई लेफ्ट बैक ही नहीं था। द मोस्ट ऑफेंसिव प्लेयर इन द पाकिस्तानी टीम स्क्वाड, रियाज, was playing left back. बेचारे ने क्या करना था? Unfair to put him there in this big game. We were having, we had Abdullah Qazi in the middle, we had Naveed in the middle, we had players that never represented Pakistan.
देखो हम जिस तरह कोई एमेच्योर टीम जाके लोगों को जी आप प्लीज आके हमारे साथ खेलो, जी आप प्लीज हमारे साथ आके आप आके खेल लो. We were giving out free caps for the Pakistan national team. Allah ki kasam se. That was, it was so frustrating when we knew we had these amazing boys sitting at home, and we had this amazing team and this structure, and then we had 1.5 really good year preparing up to this, and again to be ruined by politics. It's the third or fourth time in my career. I've only played 17 games. I should have played 60 or 70. Um, but politics always coming in the way of Pakistan's development, fortunately. चलो पॉलिटिक्स तो चलती रही और हमारी टीम के साथ भी बहुत मसले रहे, बट आखिरकार 2022 में वी कम बैक. Mm, We played that friendly against Nepal. You called mm, up. It's nobody कोई expect नहीं कर रहा था कि हम अच्छा performance देंगे. Nepal, I think Kiran Chemjong, the goalkeeper, alone had more caps than the entire squad mm, that Pakistan was taking. And for we looked competitive. हमने अच्छा mm, match खेला, कुछ chances भी create किए. Nepal, like always, they were bombarding the defense one try after the other, and you came off the line a couple of times just to prevent something happening. But there was that ball that came mm. in, and the defense missed it, and looks like you missed it as well. Maybe you were blindsided by the ball, and suddenly there's a jump from the Nepali player. The ball goes in the back of the net, Mm, and आप पे काफी criticism आया, mm. and kudos to that, you completely accepted it and everything. But at that moment, what happened? Look, as a goalkeeper, you play as a goalkeeper, you see the top professional goalkeepers making mistakes. It is not about making a mistake. It's first of all owning up to a mistake, and then second of all evolving for that, and then continuing on. So mistakes happen. People make blunders throughout the fingers. You see De Gea, he was just named the Premier League goalkeeper of the year, and he made okay, but he has also made a lot of errors, I would say. But it's not about it is not about how much you get knocked down, it's how you get up. That is the main thing. And one thing I have showed in my Pakistan career is that I have been knocked down a lot. Alhamdulillah, I've always been able to stand up and come back even stronger. I got knocked down, come back, being the best saves, having the most saves, and being the best in the SAF Cup. I got knocked down, coming in, being coming from behind, coming in, challenging cup, going in, smashing it, being knocked down, coming back again. Always come up fighting for that. Alhamdulillah, my mental game have been my strongest, and inshallah, now we're coming up again, and inshallah, again we will strive, because it's about working hard, working through things. Mistakes happen. It will happen in life. It will not be. I can easily say now it will not be my last mistake in my career. But one thing I can guarantee is that, inshallah, it is to provide the team with the safety, with the leadership that I've been providing throughout a lot of years towards my teams, towards the national team, and being able. Now you saw in Nepal, when we talk about Nepal. The first thing you saw is, especially now with Shazad Saab, is coaches, that we're playing a lot behind the back, from the back, and that's my biggest attribute, is to play football, and as I mentioned before, that was something that just came natural to me, right? It came natural to me, just to being able to play with my feet, and being able to do that on the national team is also what attributes me a lot. And we also did that in some way with Jose, where we had positioning, but not as much as we do with Sadat Saab. But inshallah, we will show even more of this. Of course, we will have some really, really, really tough opponents. So we're not being, but inshallah, give like this new team. It is amazing. I must say, the boys, they're amazing. The guys that are coming in now are amazing. I strongly believe that this will be the team that will make Pakistan historical. Inshallah, inshallah. Inshallah. And now just coming towards what's going to happen in the future. So Pakistan goes on. We played against Maldives some March में खेले. Mm, Coach Zad did some experiments in that game, mm, and it was a good game by Pakistani standards. mm. देखा जाए तो Maldives जो है, a lot of experience in that team, but the young team did well. Could have actually drawn the game, that Yes. favorable result होता.
सो अब जब हम खड़े कल स्क्वाड भी अनाउंस हो गया पाकिस्तान का. यू हैव बीन नेम्ड एज वन ऑफ द गोलकीपर्स इन द स्क्वाड. और उसके साथ साथ अब ये जो जून का महीना आ रहा है, वी हैव द फोर नेशंस कप इन हम्म, मॉरिशस व्हिच इज अ फ्रेंडली टूर्नामेंट. उसके बाद पाकिस्तान विल देन गो ऑन टू इंडिया विद हम 3 मिनिमम मैचेस yes, खेलेंगे इन द ग्रुप स्टेज एंड वी हैव गॉट द ग्रुप ऑफ डेथ अगेन, हम्म, पाकिस्तान, कुवैत, नेपाल एंड अच्छा, इंडिया. ना पहला मैच भी हमारा अगेंस्ट इंडिया, इंडिया इन हम्म, बैंगलोर. So, what are your thoughts on our chances for the SAF Cup and the Four हम्म, Nation Cup, and what should be our realistic expectations हम्म, as if the fans are हम्म। watching? क्या होना चाहिए हमारे देखो, लिए? ये तो है हमारे पाकिस्तानी लोग के साथ सब्र नहीं इतना होता, but inshallah we, I was also having another interview with Saf, and where I was saying what can the fans expect from the Pakistan team. What they can expect is that inshallah within the next 6 months, I guarantee you we'll be the strongest side in Saf. We'll be stronger than India. I guarantee you this. But Rome was not built in one day. Rome was not built in one day, Mm. and this team will be also not be built in one day. What you will see is you will see glimpse, and I guarantee you there's a very young squad. You will see glimpse of greatness, but you will also see glimpse of failure. But inshallah, we will pull together as a team and show great results. But have sabr, give us 6 months, and I guarantee you that that have sabr with the team, and we will have the strongest side in South, and we will qualify for the World Cup qualifiers. बिल्कुल. तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है हमारा है अक्टूबर में जाके होगा. ड्रॉ उसका जुलाई में Mm. है. सारे दुआ ये मांग रहे हैं कि कुवैत ना मिले दोबारा. Good. पर किस्मत हमारी हमारे हाथ में नहीं Mm. है. वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस. ये सारा कुछ जो हो रहा है, कोच आजाद ने भी बहुत दफा कहा है कि ऑल ऑफ दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर. कोई रिजल्ट्स को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि इट्स अ टीम इन प्रोग्रेस. आपको अक्टूबर में जाके आपका जो मेन डिफाइनिंग रिजल्ट है वो वही है. Mm. लेकिन इसके साथ साथ आपका एज अ गोलकीपर जब आप खेल रहे हैं तो आपके पास आगे जो आपकी सेंटर बैक पेयरिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट Mm. होती है. एंड पाकिस्तान नाउ हैज ईसा सुलेमान Mm. who's been called up 46 youth cap for England. He's won the European Championships, under 19 कैप्टन थे. साथ साथ आपके ही डेनमार्क में आपके जो दोस्त भी होंगे, आई एम श्योर, अब्दुल्ला इकबाल, 6'2" सेंटर बैक, वेरी वेरी यंग. बट इन दोनों की पार्टनरशिप लग रहा है कि पाकिस्तान के पास जिस तरह जैश थे, उनके साथ Nabil Aslam never got a chance to play No. with Zesh Rahman together. And that would have been a very interesting Mm. partnership with Pakistan. But अब ये एक नई partnership आ रही है जो अगर चल पड़ी, because they're very young as well, Mm. so this can be the partnership for the next decade as well. Inshallah. So how do you see the two, and how do you think that will help you as a goalkeeper as Mm. well? I also want to say that the great thing about this, we're talking about Abdullah, and we're talking about Isa as well. Isa. Inshallah, great players. And the great thing about this team is very flexible. We also have a lot of good players. This is the great thing about at every position we will be able to have good backups. Good backups who can either, if it's Abdullah playing or Abdullah Shah even, or in the midfield or in the wingers, or we have really strong players in every position now. But yes, of course, I believe with the squad that we have now, it can be the squad that can go up and play for the next 10, 15 years. And you also have and with the partnership with Abdullah and Isa would be it can also be a match in heaven, because you have a left-footed, really, really, really strong on the ball, and you have a Isa who's really, really strong on the ball on the right foot, to be able to predict the play, inshallah, together with me, being able to play for that and dictate the play. So I really feel confident. But again, Rome was not built in one day. We need to be able to come together as a team, like we did back with the team before the politics came into play. You need to have some camps, some games, especially games, because you can train as much as you want. It's match situations that will create the team, that will create the experience, that will create the partnerships. So inshallah, with these two tournaments, it will be inshallah a match in heaven for us to being able to go in and grab ourselves as one of the best teams in SAF.
बिल्कुल, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप क्वालिफायर देखते हैं हाउ दैट कम्स अबाउट। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग मंथ फॉर पाकिस्तान जो अगला चलेगा हमारा। एंड यूसुफ, हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू कंक्लूड यहाँ पे और हम Yes. कंक्लूजन की तरफ आते हैं। So I'm going to ask you, you're 33 now. As a goalkeeper, you were in the absolute prime of your career at the Mhm. moment. Best mix of experience and ability. And Pakistan is back. And if we get through the World Cup qualifiers, we're going to have a sustained run. लंबे मैचेस हमें मिलेंगे Mhm. अगले कुछ साल के लिए। आपके लिए पर्सनली क्या टारगेट है? यू पूरी जिंदगी आपने डेनमार्क में ज्यादा फुटबॉल खेला है, बट यू ऑल्सो हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। Yes. एंड जिस तरह दुनिया में फुटबॉल काम करता है, खासतौर पे एशिया पे, यू आर एलिजिबल फॉर एन एशियन कोटा अगर आप किसी भी एशियन लीग में जाते हैं। Mm. तो इज दैट समथिंग ऑन योर माइंड, या व्हाट डू यू सी फॉर योरसेल्फ पर्सनली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग फॉर Yes, of पाकिस्तान? course. Like, first of all, to take Pakistan all the way, to take them to the World Cup qualifiers. And, my biggest dream is actually playing in the Asia Cup together with Pakistan. And I believe that is realistic now. I believe with this team, with this setup, it is in improving the setup that we are having, keep improving, which is the key. And I believe that I think it's in 4 years now because it's coming up now, right? When we hit inshallah, the World Cup qualifiers and take it from there, I believe that we can hit that. That is, I would say, my dream. And also, like, I've played in Europe now for 20, 25 years. So inshallah, if offer comes and it's good and it will match for my family and I, to take that step, I will gladly take that step and go to Asia and play. That could be a really, because in the early days of my career, I've always been focused on Europe, 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 Europe to try to. But getting closer to Pakistan and getting closer to the national team as well, and having being in Asia and playing, it's not a secret now. You live in UK as well now. The weather is not nice. बिल्कुल। So no, no. But on a serious note, I would love to play in one of the good Asian leagues, like Malaysia, Indonesia, Thailand. Or if I get the chance, 100%. बिल्कुल, तो पाकिस्तान की टीम भी खेलेगी जून में, बहुत एक्साइटिंग महीना और जान रहा है। Inshallah. यूसुफ, बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द पाकिस्तान नेशनल Jazakallah. टीम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो फॉर अस एंड बिकमिंग आवर हमारा पहला गेस्ट जो फुटबॉलिस्तान पे आया है। और ये सिलसिला जो है कंटिन्यू रहेगा। हम इसी तरह सैफ चैंपियनशिप, फोर नेशंस कप की भी डिस्कशन करते रहेंगे और भी बहुत सारे प्लेयर आते रहेंगे हमारे पास। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। Jazakallah.